video is from Hillsar English Medium School. Hello friends, in first lesson of the science, we saw that matter around our surrounding, the particles present in the matter, their physical nature, the physical property. So we are having different things around us and they are in different states like salt is there, milk is there, ghee is there. So whatever things we have, they are in packet, and the packet sometimes it is written that it is pure ghee, pure salt, pure sugar. So it shows that contain only ghee, do not have any other material into that. Material means like any adulterant. Adulterant मतलब जो हम बोलते हैं ना कि जिसमें unwanted thing into that. In common language, pure means without any adulterant. But in the scientists, they do not think that these things are pure because in their term, in their definition, matter, if it is pure, they are having one single type of पार्टिकल एक ही जैसे पार्टिकल्स होने चाहिए दूसरे अलग मटेरियल के पार्टिकल्स अगर उसमें हो दैट डजंट कंसिडर एज pure. Let us take the example of milk. Milk, if it is written on the packet, it is pure milk. It contains only one particular milk. उसके अंदर और कुछ भी नहीं है, दूसरी चीज नहीं. But scientists, when they are thinking it is a pure, no, it doesn't pure because milk contains water, protein, fat, and some other materials into that. So other particles are also there. So in their terms, milk is not at all pure. They are having different components. So almost all the matters around us, they are present in the form of mixture. Mixture of two or more pure components. For example, seawater is there, then the water, along with that salt is present. So many minerals present in the soil. They are all mixtures. Let us see what is mixture. Mixtures are constituted by more than one kind of pure फॉर्म ऑफ अ मैटर मैटर की प्योर फॉर्म जो अलग अलग हो सकते हैं कंसिडर वन और मोर काइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर वी नो दैट dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation. जैसे कि हमने लास्ट लेसन में देखा it is a physical process that dissolving sodium chloride that is salt into the water. So salt water में से salt जो है वो हम separate कर सकते हैं by the process of evaporation. However, the sodium chloride itself is a pure substance and cannot be separated by physical process. So sodium chloride से sodium and chlorine फिजिकल प्रोसेस से हम सेपरेट नहीं कर सकते दे आर द केमिकल कंस्टिट्यूएंट सोडियम एंड क्लोरीन दे आर द केमिकल कंस्टिट्यूएंट सिमिलरली शुगर इज अ सब्सटेंस which contains only one kind of pure material and its composition is the same throughout it. Let's talk about soft drink and soil. They are not single pure substance. Soft drink में बहुत सारे chemicals होते हैं. Soil it itself is a mixture. Whatever the sources of a pure molecule may be, it will always have the same characteristics properties. मतलब कौन सा भी हम मटेरियल लो उसमें जो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो थ्रू आउट सेम ही रहती है देयरफॉर वी कैन एनी से दैट अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस मिक्सचर में वन देन मोर प्योर सब्सटेंस होते हैं लेट अस स्टडी द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट उसके अंदर कौन से कंस्टिट्यूएंट्स है क्या क्या पार्ट है कंपोनेंट है दैट फॉर्म अ मिक्सचर we can have different types of mixtures. See the activity 2.1. Here we have to take 4 beaker, name them A, B, C, D. In A beaker we have to take 50 ml of water and in that 1 teaspoon of copper sulfate solution. In B beaker again we will take 150 ml of water and in that 2 teaspoon of copper sulfate solution. देखो A में भी copper sulfate लिया B में भी copper sulfate लिया है नेक्स्ट ग्रुप सी बीकर है उसमें क्या लेना है डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू दैट यू कैन मिक्स पोटेशियम परमैंगनेट और सॉल्ट डी में भी डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट अलॉन्ग विद दैट पोटेशियम परमैंगनेट और या फिर सॉल्ट लेना है सो दैट देन वी विल मिक्स इट so to form a component which are a mixture that we have to report the observation. We will observe that A and B beaker they are having a mixture
which is with the uniform composition throughout. Such kind of mixtures we call it as a homogeneous mixture. Why do we call it as homogeneous? Means throughout the solution they are having same composition. You can also do the same thing with the help of salt or sugar. Salt और sugar क्या करना है, हमें पानी में dissolve करना है. Compare the color of the solution of the two groups. Though both the groups they have obtained a copper sulfate solution, but the intensity of color of the solution is different because A ने 1 teaspoon copper sulfate लिया था and B has taken 2 teaspoon. That homogeneous mixture they can have a variable composition. In C and D, they have obtained mixtures which contain physically distinct parts and have ununiform composition. Such mixtures are called heterogeneous mixtures. मतलब 2 or 3 components है, we can see them separately, observe them separately. They call it heterogeneous mixtures. So mixtures of sodium chloride and iron filings. Mixture of salt and sulfur and oil and water, they are examples homogeneous mixture. This with 2 or 3 components they cannot mix properly to form uniform composition. They are heterogeneous mixture. Move towards the second activity. Let us again divide the class into the four group A, B, C, D. Distribute the following samples to each group. Few crystals of copper sulfate to A, one spatula full of copper sulfate to B, chalk powder or the wheat flour to C, and a few drops of milk or ink to the group D. The अलग अलग beaker में container में four different things we have taken. In each group should add the given sample in the water and stir properly using a glass rod. ये सारी चीजें जो हमें मिली है वो एक बीकर में पानी लेना है, उसमें ऐड करना है, मिक्स करना है. स्टर करना मीन्स मिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड. आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल? होने के बाद हमें पार्टिकल्स दिखते हैं क्या? डायरेक्ट अ बीम ऑफ अ लाइट फ्रॉम टॉर्च through the beaker containing the mixture and observe the light from the front. क्या करना है, एक टॉर्च लेनी है, उससे लाइट हमें डालनी है बीकर पर और दूसरे साइड से हमें ऑब्जर्व करने. वॉज द पाथ ऑफ द बीम ऑफ अ लाइट विजिबल? हमें लाइट की जो पाथ है वो बीकर से दिख रही है क्या नहीं. लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स. Means let it stand for some time. Let the particles of this set up the filtration apparatus in the meantime. Then filter the mixture. Is there any residues on the filter paper? क्या करना है, जो मिक्सचर है उसको फिल्टर पेपर के ऊपर से डाल देना है. सो अगर रेसिड्यूज बचते हैं सो दैट आर द थिंग्स विच आर नॉट गॉट completely mixed with the water. So what the group A and B will observe? They have got the clear solution. While C they got the suspension. Suspension मतलब chalk powder डाली थी, chalk powder मिक्स नहीं होती वाटर के साथ. We call it as suspension. While D it has got colloidal solution. D beaker में क्या था? It was milk. Milk also cannot get completely mixed with the water because it contains fat. This is the filtration unit. एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें एक conical funnel लिया है और funnel के अंदर एक फिल्टर पेपर डाला है थ्रू विच वी अलाउ दैट सॉल्यूशन टू पास थ्रू. अगर रेसिड्यूज है जो कम्प्लीटली मिक्स नहीं हुए इट विल रिमेन ओवर द सरफेस ऑफ फिल्टर पेपर और जो क्लियर सॉल्यूशन है इट विल फिल्टर आउट इनटू द टेस्ट ट्यूब. नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशंस, suspension and colloidal solution in the following sections. So, what is a solution? Solution is homogeneous mixture of two or more substances. दो और उससे ज्यादा सब्सटेंस लेके जब मिला मिक्स करते हो अच्छे से मिक्स हो जाता है, वी कॉल इट एज होमोजेनियस solution. We call that as solution. You come across various types of solution in your daily life. Lemonades, soda water, etc. are all examples of solution. Usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid, liquid or a gas dissolved in it. लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों में से कौन सा भी स्टेट है डिजोल्व हुआ. बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन दैट वी कॉल alloys and gaseous solution that is air. In a solution there is a homogeneity at the particle level. मतलब 2 और 3 से ज्यादा पार्टिकल्स तो कम्प्लीटली मिक्स हो गए हैं. फॉर एग्जाम्पल लिमोनेड्स
It tastes the same throughout, same taste लगती है. This shows that the particles of the sugar and the salt, they are evenly distributed in the solution. Let us see about alloys. Alloys are the mixtures of two or more metals or metals and non-metal and cannot be separated into their components by physical method. से वो separate नहीं कर सकते. दो metal है या फिर one metal non-metal which are completely mixed such that cannot be separated by physical method. But still an alloy is considered as a mixture because it shows the properties of its constituent. दोनों की properties हमें दिखती है and can have variable composition. For example, brass is a mixture of approximately 30% of zinc and 70% of copper. So we were talking about the solution. Solution, it has a solvent and a solute. है कि नहीं, दो कंपोनेंट होते हैं. सॉल्वेंट में सोल्यूट जो होते हैं वो डिसॉल्व होता है. सॉल्वेंट एंड सोल्यूट. सॉल्वेंट generally it is liquid in nature. The components of the solution that dissolves the other component in it, usually the component present in a large amount is called solvent. So the component of the solution that is dissolve in the solvent usually present in the lesser amount we call it as solute. जो चीज अपने में डिसॉल्व करके लेती है और ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नंबर में होती है दैट इज सॉल्वेंट, और जो चीज खुद डिसॉल्व होती है दूसरे के साथ मिक्स हो जाती है एंड लेस क्वांटिटी में होती है दैट इज सोल्यूट. Now let us see examples. A solution of a sugar in a water is a solid in liquid solution. है कि नहीं? So water sugar solution कैसे बनाते हैं? We take water and into that we add the sugar. Water is much more quantity, so water is solvent. And sugar we are adding which is getting dissolved in the water, that is solute. So solvent and solute, the idea is clear. A solution of iodine in alcohol knows अ टिंचर ऑफ आयोडीन. मतलब आयोडीन जब हम अल्कोहल में मिक्स करते हैं उसे क्या बोलते हैं? टिंचर ऑफ आयोडीन. ये द आयोडीन इज सोल्यूट विच इज सॉलिड इन नेचर एंड अल्कोहल इज लिक्विड इन नेचर दैट इज सॉल्वेंट. वेल एरेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं ना लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा दे आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशन. मतलब हम पहले सोडा वाटर लेते हैं, मतलब जो एक कलर्ड फ्लेवर्ड वाटर लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं. ये द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज सोल्यूट, वेल दैट कलर फ्लेवर्ड वाटर इज नथिंग बट सॉल्वेंट. Let us take the last example. It is of air. Air is nothing but a mixture of different gases. Main two gases, it has oxygen, which is 21%, nitrogen, which is 78%, and some other remaining other gases are present in very small quantities. So we'll stop for this. Properties of solution we'll say in the next part. Your homework is to write the definition of homogeneous mixture, heterogeneous mixture, and solution. Goodbye.